Hello students, welcome back to Gradify Academy. Now this video is for the preparation of ledger account for standard 11 commerce. So basically we are going to solve a sum wherein you have to make the ledger account, but before that, for making the ledger account, first you will have to pass the journal entries. So here is a sum in the books of Karan. This is the question, an important question. The following balances appeared in the ledger of Karan on 1st Jan 2018. Now 1st January 2018 is the opening date of the accounting year. Okay, some balances are given as on 1st Jan. So if the balances given are on 1st of January or maybe 1st of April, if the year ending is 31st March, that we will discuss later on. So here these are the opening balances. Some debit balances are given and some credit balances are given. So this we will take into use while preparing the ledger account. Before that, we will have to pass the journal entries. Now here some transactions are given and we have already discussed how to pass the journal entries in our previous videos. So transaction is from Jan 5. Bought goods from Rushi 10,000. So first what you will have to do, you will have to make a journal book like this, date, particulars. In the journal book, the folio number is the ledger folio, 2 columns for debit in rupees, that is the amount, and the credit in rupees. Now we'll start passing the journal entry first. It is bought goods from Rushi rupees 10,000. Now, if you are bringing or if you are purchasing goods from Rushi, here you can see for cash, specifically the word cash is not mentioned, okay, which means that this transaction is a credit transaction. इसका मतलब कि हमने goods ले लिया है but Rushi को पैसा नहीं दिया, okay, because the term cash is not mentioned here. So instead of cash, what we will do, we will write Rushi's name. When goods are coming in, goods being a real account, the golden rule, if you remember, is debit what comes in and credit what goes out. So goods are coming in, so we will write purchase account debit. If it is purchase of goods, you will write purchase account debit, but we will not write to cash. Cash is going out, right? But here this is a credit transaction. Instead of cash, we will write Rushi's account. So Rushi's account will be credited. So the journal entry will be, you will have to write the date first, January, year is 2018, and date is 5th of Jan. So journal entry will be purchase account debit. Students, if the commodity what you're purchasing are goods, then you will have to write purchase account. But if you're purchasing furniture or any kind of asset, in that case you will have to mention, you will have to debit the asset account. Suppose if I am purchasing furniture, if I am purchasing machinery, so I will write machinery account debit, or I will write furniture account debit. But if those are goods, specifically goods, then you can write purchase account debit. We can also write goods account, but while preparing the account, while preparing the ledger account, we will make purchase account. So I will write purchase account debit. It is 10,000 to Rushi's account, because this is a credit transaction. To Rushi's account 10,000. Narration: being goods purchased on credit. Okay. Second is on the 10th of Jan. Transaction is drew from bank 20,000 for office use and 6,000 for self-use. Self-use means personal use. And you know, when there is personal use, it has to be mentioned as drawings. Okay, drawings. So in this case, in the second transaction dated 10th of Jan, you will have to pass a combined entry. Combined entry भी हमने previous video में देखा है कि combine में या तो debit एक से ज़्यादा होता है या credit एक से ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे drew from bank, which means you are withdrawing money from the bank for office use. Okay, so cash is coming in, cash account will be debited, and for self use, drawings account will be debited. So the journal entry will be cash account debit 20,000, drawings account debit 6,000, and you are withdrawing from the bank. So bank account will be credited.
Now here in this sum, the name of the bank is mentioned here. See, Bank of Maharashtra. So in this case, Bank of Maharashtra is a personal account and Bank of Maharashtra is the giver. Right? Credit the giver. We are withdrawing. Who is the giver? Bank of Maharashtra. So bank, you need not write bank account to bank account. You will write to Bank of Maharashtra account. So journal entry for 10th transaction dated 10th of Jan. Cash account debit. Cash account debit 20,000. For the withdrawals, you will write drawings account debit. Do not write self-use account debit. Self-use or personal use are mentioned as drawings. Drawings account debit 6,000 to Bank of Maharashtra account. नरेशन तो भी आपको मालूम है, आप अपने ओन वर्ड्स में स्टार्टिंग विद द वर्ड बीइंग कैश withdrawn for personal use and office use. You can write that here. Next is 17th. Returned goods to Rushi. Returned goods. We have purchased goods worth rupees 10,000 from Rushi on 5th of Jan. उसमें से 2,000 का goods we are giving it back, returning. So when you're purchasing and then when you're returning, it is known as purchase returns. Okay, so here who is the receiver? Rushi is the receiver. Rushi account will be debited and goods are going out. Credit what goes out. So you need not write goods because we are using purchase. So when the goods are returned, you will write to purchase return account. Okay, so 17 Rushi's account debit to purchase return account. Amount is 2,000. Write the narration. Next is 19. Cash purchases 14,000. The word is cash purchases. Cash purchase means goods purchased for cash. Okay, so it is purchased. So again, you are purchasing goods and you are paying in cash. This is a cash transaction. So purchase account debit to cash account. Purchase account debit. Amount rupees 14,000 debit and 14,000 in the amount column credit. 22nd the transaction is cash sales 20,000, which means goods sold for cash. When you're selling goods for cash, cash will come in. Okay, debit what comes in. So cash account will be debited and goods are going out. So instead of writing two goods, you can write two sales. If we are using purchases for purchase, then you will write sales when the goods are sold. So cash account debit to sales account. Cash account debit 20,000 to sales account 20,000. Okay, then 26th, deposited into bank 16,000. Okay, we are depositing money into the bank. Now here Bank of Maharashtra, because the name is given in the sum. Bank of Maharashtra will take it as personal account. Bank is the receiver, right? So you'll write Bank of Maharashtra account debit. And what are we depositing? Cash. Cash being a real account, credit what goes out. So what will be the journal entry? Bank of Maharashtra account debit to cash 16,000. 26th. Bank of $16,000 to cash account. Don't get confused. It is going into our account only, but we have to use the rule. So cash being a real account, वो हमारे हाथ से जा रहा है, बैंक अकाउंट में जा रहा है, but it is going from our hand. So it goes out of the business. Business point of view से the credit what goes out. So it is going out of the business into the bank account. So bank is the receiver. Bank of Maharashtra is the receiver. Bank of Maharashtra account debit to cash account. And finally 28th,
interest collected by bank 7,000 on our behalf. Interest collected by bank, which means bank is collecting 7,000 rupees interest. Maybe that interest is from investment or maybe interest from somewhere else. Bank is receiving on our behalf. So interest is an income for us. हमारे अकाउंट में बैंक ने ले लिया, इंटरेस्ट लेकर के हमारे अकाउंट में डाल दिया. सो इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज एन इनकम फॉर अस. Credit all income and gain. Nominal account rule, credit all income and gain. So interest account will be credited, right? And who is the receiver? Here bank means Bank of Maharashtra. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हम डाल रहे हैं ना, हमारे अकाउंट में जा रहा है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट विल बी द जर्नल एंट्री. 28 बैंक ऑफ Maharashtra account debit 7,000 to, you can write interest account or you can write to interest received account. Okay, to interest account 700, and of course you have to mention all the narrations after your journal entry. Okay, you can leave the narration only when it is clearly mentioned in the sum. Narration not required. So here we have finished our journal entries. So you will have to do the casting. Casting means totaling. Casting or totaling. The total कर लो debit and credit का. So the total of debit and credit here when added it is 95,000. Debit and 95,000 credit. So these are the journal entries. Hope आपको समझ में आ गया होगा. Now basically ये चैप्टर है लेजर अकाउंट का. सो नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक द लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट बनाने के लिए पहले आपको सम आता है, क्वेश्चन आता है, यू पास द जर्नल एंट्रीज एंड देन मेक द लेजर अकाउंट एंड देन मेक द ट्रायल बैलेंस. सो फर्स्ट विल पास द जर्नल एंट्रीज. नाउ वी आर गोइंग टू मेक द लेजर अकाउंट. सो इन केस इफ द सम मेंशंस particularly specifically they will mention कि prepare purchase account, cash account, sales account. Okay, जो मेंशन किया होता है तो विल प्रिपेयर ओनली दोस लेजर अकाउंट. बट इफ इट इज नॉट मेंशन वी विल ओपन ऑल द नेसेसरी रिक्वायर्ड लेजर अकाउंट्स. सो लेट्स सी कि कौन सा अकाउंट हमको ओपन करना है. सो एज पर द जर्नल एंट्री फर्स्ट आई विल ओपन परचेज अकाउंट. अंडरलाइन कर लो उसको पेंसिल से. देन सेकेंड इज रूशीज अकाउंट. थर्ड इज कैश अकाउंट. फोर्थ इज Karan's drawing account. Fifth, Rushi has already been opened. तो एक और बार आपको नहीं खोलना है. जो आपने अंडरलाइन कर लिया है that you will not have to, you will not open that account. So Rushi is done. Purchase return is the next account, ledger account. Purchase we have opened, cash we have opened. Open means we have underlined this. Cash again and then sales, underline sales, and then Bank of Maharashtra. Bank of Maharashtra. Okay, and that's it. And interest. So how many ledger accounts are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Those which you have underlined. तो हमको 8 ledger accounts खोलना है. Okay, as per the requirement. Okay. Now, in the sum, there are some opening balances given. So when you open the ledger account, suppose if I am opening the cash account, तो कैश अकाउंट में जो भी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग, जो भी जर्नल एंट्री का ट्रांजैक्शन का हमने जर्नल एंट्री पास किया है, रिकॉर्डिंग किया है, वो हम डालेंगे. बट वो डालने के पहले आपको ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस डालना है. तो आई विल शो यू हाउ. सो व्हाट आर वी गोइंग टू प्रिपेयर? विच ऑल लेजर अकाउंट? वी आर गोइंग टू मेक purchase account, those which we have underlined here, na? So you will write in between. This is the debit side, this is the credit side. Debit side and credit side of the ledger account. You have to divide your page, or you have to divide your book into two, the left hand side and the right hand side. Left hand side is the debit side. Date, particulars, the page number mentioned in the ledger is JF. JF means journal folio, journal page number, and the amount in rupees. This is debit side. On the credit side, date, particulars, journal folio, and amount in rupees. In between the debit and the credit, you will write purchase account. Leave sufficient space
ओके बहुत अच्छा स्पेस आपको छोड़ना है, क्योंकि यू हैव टू ओपन द लेजर अकाउंट, देन यू हैव टू डू द पोस्टिंग्स एंड देन यू हैव टू क्लोज एंड देन यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड द क्लोजिंग बैलेंस. तो एक अच्छा जगह हमको चाहिए. एंड एज इट इज़ हमारे पास जब हम जर्नल एंट्री देखते हैं ना, तो वी हैव 2 ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेस अकाउंट. ओके सो इतना हम ओपन कर देंगे. देन आई विल ओपन कैश अकाउंट. कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट शुड ऑलवेज बी अ बिगर अकाउंट. उसमें स्पेस ज़्यादा लगता है क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस हमेशा ज़्यादा होते हैं. ओके देन कम्स रुशीज अकाउंट. रुशीज अकाउंट. देन इज ड्राइंग्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स. ड्राइंग्स अकाउंट, purchase return account and sales account. Okay, Bank of Maharashtra, Bank of Maharashtra account, and finally interest account. Okay, so how many ledger accounts have we opened? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so these are the ledger accounts which we have opened as per our journal entries. The ledger account should always be very neat and neatly underlined, and you should make the column very neatly. The presentation of the sum is very important in accounts. Okay, now we have opened the account. So here you can see the opening balance of cash account. Now students, here debit balance on the opening date means this opening balance of cash account will come on the debit side of the cash account. Okay, you'll open the cash account and then this opening balance will come on the debit side. Opening balances or opening debit balances are always on the debit side, and opening credit balances are always on the credit side. I'll show you how. Now this is the cash account, you can see here. Okay, so opening cash account is given here debit balance, right? Rupees. Date we will write 1st January 2018. Just write like this, 1st Jan 2018. And opening balance on the debit side you will write to balance brought down. It is 60,000. So write on the debit side 60,000. Now you can see we have opened all the ledger accounts. ledger account हमने मार्क किया और हमने सब एक साथ में ओपन किया. चाहे जितना पेज लगे आपको सारे अकाउंट्स जो है ना वो एक साथ में ओपन करना है. नेक्स्ट इज परचेस अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ परचेस 1/4/2018. डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट साइड. दिस इज द ओपनिंग बैलेंस. ओके, सो डेबिट बैलेंस ऑन द डेबिट साइड 80,000. To balance brought down 80,000. Bank of Maharashtra. Here is Bank of Maharashtra. Same date 1/4/2018. Debit balance on the debit side opening. To balance brought down, it is 1 lakh. Don't forget to mention rupees, that we have already written here. Then is current capital account. We do not have any journal entries related to current capital account, isn't it? So they have given the opening balance on the credit side of the information, that is credit balance. Current capital account, capital balance of the proprietor is always a credit balance. Okay, so हम एक यहाँ पर capital account भी खोल लेते हैं. And it is current capital account. So mention current capital account 1/4/2018. Credit balance means opening balance will come here on the credit side. To balance brought down.
2 lakh. And finally sales on the credit side, here 1/4/2018 by opening balance or by balance brought down 40,000. So if the opening balances are given, आपको ऊपर फर्स्ट लाइन में ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग डेट पे, एंड सॉरी दिस इज नॉट 1 अप्रैल, दिस इज 1 जनवरी, ठीक है. क्वेश्चन में ओपनिंग 1 जनवरी है तो क्लोजिंग विल बी डिसम्बर, isn't it? So I have written April, it is Jan. Okay, so the opening balances have been posted. Now look at the first journal entry, purchase account debit to Rushi's account. तो ये दोनों है ना, हमको परचेज एंड रूशी के उसमें डालना है अकाउंट में. परचेज अकाउंट में यू विल पुट ऑन द डेबिट साइड टू रूशीज अकाउंट. दिस इज 5th of Jan. सो परचेज अकाउंट डेबिट साइड टू रूशीज अकाउंट. जर्नल एंट्री में जो क्रेडिट होता है ना यहाँ पर, वो लेजर अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है. रिमेंबर दैट जर्नल एंट्री में जो 2 होता है ना, 2 रूशी, दैट इज द क्रेडिट बैलेंस, वो हमको यहाँ पर डेबिट में डालना पड़ता है. टू रूशीज अकाउंट 10,000 एंड इमीडिएटली आपको इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट, लेजर अकाउंट हैज़ 2 इफेक्ट्स, अ डेबिट इफेक्ट एंड अ क्रेडिट इफेक्ट. अगर आपने एक ही इफेक्ट डाला तो कहीं ना कहीं जाकर के आपका ट्रायल बैलेंस, इसके बाद हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, दैट विल नॉट टैली और योर फाइनल अकाउंट्स विल हैव अ मिस्टेक. सो 2 इफेक्ट्स, परचेज टू रूशी, परचेज के डेबिट साइड पे डालो 2 रूशी, एंड रूशी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यू विल राइट बाय परचेसेस या बाय परचेज अकाउंट. राइट द डेट 5th Jan 2018, अंडरस्टूड, एंड द अमाउंट इज 10,000. एक जर्नल एंट्री का 2 इफेक्ट आपको साथ में डालना है. डोंट वेट कि पहले मैं ये कर लूँ फिर मैं इसको क्लोज करूँ, देन यू ओपन द कैश अकाउंट एंड देन दिस विल टेक टाइम. This will take time and then you will not be able to complete your sums. So what I have done, purchase to Rushi. So purchase के debit side पे 2 Rushi 10,000, Rushi के credit side पे by purchase 10,000. ऐसे आपको सारे journal entries के transactions, I mean the ledger account simultaneously post करना है, posting करना है. Okay. Next is cash account debit, drawings account debit to Bank of Maharashtra. So cash में 10th you will write to Bank of Maharashtra. टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र. ओके, नाउ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कैश का जो अमाउंट है ना, ड्राइंग्स का नहीं, कैश का जो अमाउंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप सिर्फ कैश का डालेंगे. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र 20,000. कैश इज फॉर 20,000, सो यू विल राइट 20,000. राइट. सिमिलरली ड्राइंग्स अकाउंट में यू विल राइट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6,000. सो ड्राइंग्स अकाउंट डेट इज 10th of Jan 2018 to Bank of Maharashtra. To Bank of Maharashtra, and you will write the amount of drawings. Okay, 6,000. Full amount 20,000. 26,000 आपको नहीं लिखना है, आपको कैश का 20 एंड ड्राइंग्स का 6. सो कैश में हमने डेबिट साइड पे टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र 20,000 एंड ड्राइंग्स अकाउंट में टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6,000. Now in Bank of Maharashtra account, now we have passed debit effect of 26,000, right? Now we have to pass the credit effect. So Bank of Maharashtra mein you will write 10/1/2018 by cash account 20,000 जो कैश का अमाउंट था, and same date by drawings account. This is the double effect for one amount. Understood? 20,000 का credit and debit and 6,000 का debit and credit. This is how you do the postings. Now, the next journal entry is Rushi account debit to purchase return 2,000. So Rushi के debit side पे date is 17th of Jan 2018. Rushi's account debit to purchase. So on the debit side I will write to purchase return 2,000. To purchase return account 2,000 and corresponding account में immediately आपको second effect
purchase return account credit side by Rushi's account 2000. Okay. Next journal entry is purchase account debit to cash. So 19th to cash account 14,000, and in the cash account 19th Jan 2018 you will write by purchase account 14,000. Done. Debit effect, credit effect. Now next journal entry is cash account debit to sales. So in the cash account 22nd of Jan to sales account 20,000, and in sales account date is 22nd of Jan by cash account 20,000. Okay, debit 20,000 and credit 20,000. Next is Bank of Maharashtra account debit to cash 16,000. Date is 26th of Jan 2018. Bank of Maharashtra to cash account. It is 16,000. So Bank of Maharashtra debit side to cash, and in cash account by Bank of Maharashtra account credit effect 16,000. Then Bank of Maharashtra account debit to interest 28 Jan to interest account, amount is 7,000, and corresponding credit effect will go in interest account 28th of Jan by Bank of Maharashtra account 7,000. So done. All the journal entries are completed. The corresponding debit effect and credit effect has been posted in the इंडिविजुअल लेजर अकाउंट. तो आपको क्या करना है, एक जर्नल एंट्री में दो इफेक्ट्स होते हैं लेजर अकाउंट के. डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट साइमल्टेनियसली आपको डालना है, एक अकाउंट के डेबिट में तो करस्पॉन्डिंग अकाउंट के क्रेडिट में. आपका मिस्टेक नहीं होगा. हाँ, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. नाउ आई विल शो यू हाउ टू क्लोज द लेजर अकाउंट. ओके, क्लोज द लेजर अकाउंट. सो हियर यू कैन सी द डेबिट साइड ऑफ परचेस अकाउंट 80,000, 10,000 and 14,000. ओके, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, विच मीन्स द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड इज जीरो, सो दिस इज मोर. तो दोनों साइड के जो अमाउंट्स ज़्यादा है ना, वो आपको दोनों के टोटल में लिखना है. लाइक यू नीड नॉट राइट जीरो ईयर, यू विल राइट 80 + 10 + 14 इज 1,04,000. हमेशा 2 या 3 लाइन छोड़ो एंड राइट 1,00,000. द क्लोजिंग इज़ वेरी टीडियस जॉब, तो आपको बहुत संभाल के जगह छोड़ छोड़ कर करेंगे तो इट विल बी नीट, नहीं तो फिर वो पूरा जम्बल अप हो जाएगा. सो 1,04,000 डेबिट में लिखा है ना, तो राइट 1,04,000 ऑन द क्रेडिट साइड. नाउ लेजर अकाउंट हैज़ टू बी बैलेंस्ड. अगर यहाँ पर जीरो है और यहाँ पे 1,04,000 है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर 1,04,000 का अमाउंट डालना पड़ेगा. सो 1,04,000 जस्ट अबव योर टोटल, जस्ट अबव योर टोटल 1,04,000. डोंट राइट, टेक्स्ट बुक वाले ऊपर लिख देते, देन यू विल गेट कंफ्यूज. ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा लास्ट लाइन में आता है एंड ओपनिंग बैलेंस हमेशा आपको फर्स्ट लाइन पे लिखना चाहिए. तो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस. सो आई विल राइट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, CD कैरिड डाउन. आपको उसको कैरी करके नीचे लेके आना है. राइट नाउ मंथ वॉज जैन, तो लास्ट डेट ऑफ जनवरी इज 31st of Jan 2018. तो आप लिखेंगे 31st January 2018 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,04,000. दिस क्लोजिंग बैलेंस यू विल हैव टू ओपन आफ्टर द टोटल. टोटल के नीचे ऑपोजिट साइड पे, रिमेंबर ऑपोजिट साइड पे, यहाँ पर अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस आया है क्रेडिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे यू विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. Now this balance is the opening balance of next month. जैन के बाद कौन सा मंथ आता है? फेब. तो 1st of February 2018 को ये ओपनिंग बैलेंस है. तो 31st Jan टोटल के ऊपर क्लोजिंग बैलेंस एंड 1st of next period or 1st of next month this will be the opening balance on the opposite side.
of the closing balance. Okay, now this is done, purchase account is closed. अब हम close करेंगे cash account. So cash account का total on the debit side is 60 and 40. So this is 1 lakh. Okay, 1 lakh. Now 1 lakh, this is less than 1 lakh. It is 20 and 30,000. So 1 lakh minus 30, तो यहाँ पे 70,000 short है, तो वो हो गया आपका closing balance 70,000. Now when I write 70,000 here, this account is tallied, right? So on the 31st of Jan of the same year, you will write by balance carried down 70,000. 1st of Feb to balance brought down, ये balance इस side पे आएगा and that will be 70,000. This is how you close the ledger account. Okay, total के ऊपर and total के नीचे on the opposite side. Okay, so like this you can close all the accounts and show the closing and opening balances. Now here in the Rushi's account, एक और account हम लोग close कर लेते हैं. 10,000 total. This is less. Debit side is less. 10,000 and 10,000 minus 2,000 is 8,000 on the debit side. To balance carried down 31st Jan. Closing balance and opening balance कोई भी side पे आ सकता है. It depends कि which side is heavier and which side is lighter. तो lighter side पे हमेशा balance आएगा, वो debit में भी आ सकता है. It can come on the credit side also. Now here the opening on 1st of February will be on the credit side here because closing आपका debit में है. Opening will be by balance brought down 8,000. And so on, you can close your account. And then after closing all the account, the next topic is trial balance. So trial balance में क्या होता है ना कि whatever your closing balance is, अगर आपके डेबिट में क्लोजिंग बैलेंस आया है तो आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में पोस्ट करना है, और अगर क्रेडिट में आया है क्लोजिंग बैलेंस तो आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में पोस्ट करना है, राइट? दिस करंट कैपिटल अकाउंट 2 lakh, okay? So the balance where it will come? It will come on the debit side here. To balance carried down 2 lakhs. Here it will be by balance brought down 1st of Feb 2 lakhs. Okay, so this is how you close the account. सारे account आपको ऐसे ही close करना है. And then this balance are carried forward to your trial balance. Trial balance देख करके फिर हम final accounts बनाते हैं and then the final account should tally. So remember everything right from journal entry, then you will do the ledger account, then you will do the trial balance, फिर हम बनाते हैं final accounts. अगर आपके किसी भी पर्टिकुलर बुक में, जर्नल बुक में या लेजर बुक में कोई भी मिस्टेक होगा तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर फाइनल अकाउंट और इन योर ट्रायल बैलेंस. ईदर योर ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली or your final accounts will not tally. But if you are doing it very cautiously, very correctly, the journal entries are correct. Now as per the journal entries, the ledger account are made, all the balances are then transferred to trial balance. Your trial balance will tally. Looking at the trial balance, you will make your final accounts and then the final accounts will also tally. हाँ, आपका टोटलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ द लेजर अकाउंट स्टूडेंट्स, हाउ यू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री एंड द लेजर अकाउंट. होप आपको क्लोजिंग एंड ओपनिंग समझ में आया होगा. सो दैट्स इट. तो वी आर डन विद जर्नल एंड द लेजर. अगर और कोई टॉपिक्स में आपको कोई इशू है या आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए. आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर द जर्नल एंड लेजर. आपको मेरा वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.